Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Mrs. Bushra Mushtaq, PG Psychiatric Nursing. Today I'm with a new topic, that is psychiatric emergencies and crisis intervention. I'll be dividing this topic into different parts. Today is the first part. In this video, I will be discussing about the different psychiatric emergencies, the introduction of psychiatric emergencies, definition, and which are the common psychiatric emergencies, and in which I will be discussing about suicidal threats, its types, etiology, and risk factors. नाउ इंट्रोडक्शन ऑफ द साइकेट्रिक इमरजेंसीज बेसिकली अगर मैं आपको ये समझा दूँ कि साइकेट्रिक इमरजेंसी होती क्या है तो मैं ये कहूँगी इट इज़ अ डिसहार्मनी बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द एनवायरनमेंट, राइट, बिटवीन एन इंडिविजुअल एंड हिज एनवायरनमेंट. एंड वो ऐसी कंडीशन होती है, ऐसी सिचुएशन होती है कि क्लाइंट और उसके रिलेटिव्स को लेनी ही पड़ती है इमीडिएट ट्रीटमेंट. And it is almost certain disorganization, whether in the personality, which will definitely affect किस पे डालते उसके socio occupational function पे, not only the social relationships but it is occupational functions as well. Basically ये वो condition है जिसमें alteration in behavior होता है, alteration in inner emotions या उसके thoughts पे, जिसकी वजह से वो immediate कोई ऐसा अटेंशन सीकिंग इमीडिएट बिहेवियर दिखाता है जिसको केयर की बहुत ज़रूरत होती है. टॉकिंग अबाउट दिस साइकेट्रिक इमरजेंसीज, वी कैन से, एज आई टोल्ड यू, इट इज़ अ डिस्टर्बेंस इन देयर थाट्स, इन देयर इफेक्ट्स, इन देयर बिहेवियर, एंड डेफिनेटली वो किस पे आएगा, साइकोमोटर एक्शन पे, और उसकी एग्जिस्टेंस को, उस इंडिविजुअल की एग्जिस्टेंस को या दूसरे पीपल जो उसके इर्द गिर्द होंगे उनकी एग्जिस्टेंस को भी थ्रेट करेगा, जिसकी वजह से वो बहुत सारा कुछ रिजल्ट कर सकता है. फॉर एग्जाम्पल सुसाइड, फॉर एग्जाम्पल होमिसाइड, एंड विच these conditions they need an immediate care, immediate intervention, ताकि patient की भी life secure हो and the concerned persons जो इसके साथ होंगे. And definitely the whole situation, it is triggered by anxiety also. The family members are anxietic and they feel the emotionally stressed out, so because of the disorganization between the person and his environment. In this picture you can see the three, that is the trio. You can see the thoughts, emotions, and the behaviors, because one, the thoughts in your mind and the emotions which get developed because of these thoughts, and then they all lead to the behavior, so they are interlinked. There is disturbance, disharmony between the environment and the person itself, and in the person there are thoughts, emotions, and then it leads to a specific behavior which can lead to the threat of an individual's security and also the security of the persons around him. Now coming to the definition of the psychiatric emergencies, clear for definition, it is those circumstances which calls for immediate help. ऐसी emergencies develop हो जाती है, ऐसे circumstances develop हो जाते जिसकी वजह से हमें immediate action लेना पड़ता है, immediate care देना पड़ता है, or we can define it as a condition which needs an immediate attention and care. If the situation is unavoidable, there are the risk to an individual as well as to the people which are surrounding him. Now there are the common types of psychiatric emergencies, different types of the psychiatric emergencies which I have mentioned here. There may be the additional ones also, you can add that. The common types are the suicidal threats, the violent and aggressive and excitement behaviors, the panic attacks, stupor and catatonic syndrome or catatonic behavior, you can say, the hysterical attacks or transient situational disturbances. These are the most common types of the psychiatric emergencies which you will see in your hospital settings also. So there can be any other you can add to it. Now the first is the suicidal threat.
बेसिकली अगर हम सुसाइड की बात करेंगे इन द साइकियाट्री, इट इज़ कंसिडर द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ द इमरजेंसीज, क्योंकि ये हम वार्ड्स में भी देखते हैं इन आवर हॉस्पिटल सेटिंग्स ऑल्सो, और विद द persons who are suffering from any sort of psychiatric illnesses, they can be seen in the home environment also. Suicidal threat, and it is one of the most common types of the psychiatric emergencies. What is basically this suicide? If we talk about the word suicide, it is the harm, deliberate harm to self, right? And or it can be intentional act of killing oneself. ठीक है, अब अगर थ्रेट है तो वेदर ही सफरिंग फ्रॉम एनी साइकेट्रिक डिजीज, स्ट्रेस है, या जो भी मैं बात करूँगी आगे जाके, उसकी वजह से उसने उस पर्सन को मतलब दूसरों को लगता है कि नो, he can cause harm to himself, he can cause the intentional harm or kill oneself. That is known as suicidal threat. That is the biggest and the commonest psychiatric emergencies. There are different types. For example, suicide, which we call as self-murder or deliberate harm in the males, we can say that, or we can say the parasuicide or the pseudocide, which is the attempt of suicide, not the fatal deliberate harm to self, which is seen most commonly in the females. You may have back in my lectures in the hysteric disorder, I have mentioned this when I was discussing about the personality disorders. There I mentioned there is the personality in the females that seeking of getting attention, so they attempt to do suicide, but in those situations किनको लगेगा कि मुझे कोई बचाने आएगा, so that is what is called as parasuicide or the pseudocide. Means कि non fatal होता है वो, because she knows that she will not get killed, but still attempt is that sort of. But in man it is one go and he's done with his harming himself or self-murdered. But here we can say they can be of the two types, but suicide is self harm or deliberate harm to oneself. Now the precipitating factors, which can be the boost up फैक्टर्स, जो इसको क्या इसको बोलते हैं, सुसाइड को और बढ़ा सकते हैं. जैसे कि कोई ये पाया गया है मेजॉरिटी ऑफ द केसेस विद मेंटल इलनेसेस आर इन एन थ्रेट ऑफ बीइंग सेल्फ सुसाइड, और वी कैन से सेल्फ हार्म. इंटीमेट पार्टनर की वजह से, रिसेंट क्राइसिस की वजह से, फिज़िकल हेल्थ की वजह से, प्रॉब्लम्स एट वर्क प्लेस उसकी वजह से, या फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से, ये सारे प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स फॉर द सुसाइड पाए गए हैं. Now coming to the etiology, there are different etiological conditions, like there are the psychiatric diseases, the physical disorders, or any other psychological factors. So first is the psychiatric disorders, जो मेन इटियोलॉजिकल फैक्टर्स है विच प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन कॉजिंग द सुसाइड. द फर्स्ट वन इज़ द मेजर डिप्रेशन. जिसको मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर डिजीज़ है, डेफिनेटली ही विल गो फॉर द सुसाइड. स्कीज़ोफ्रेनिया, और द पर्सन गोइंग फॉर द अल्कोहल और ड्रग अब्यूज़, डिमेंशिया, delirium, and the personality disorders of any type, or which I have discussed already. There you can see there are the various personalities जिनमें ये suicide करने का chances होता है. So the psychiatric disorder, they play a major etiological factors in the psychiatric emergency, especially in the suicidal threats. नाउ द फिज़िकल डिसऑर्डर्स, अगर फिज़िकल कोई डिसऑर्डर है क्लाइंट में, उसको इनक्योरेबल कोई डिज़ीज़ है, बहुत सारा फिज़िकल पेन है, या कोई ऐसा डिसऑर्डर है like the malignancy, like the AIDS, so he can go for the suicide. Or any psychosocial factor है, जैसे कि failure in exams. You can see there are many more cases which come in your hospital settings because of their failure in their exam. They could not grow through, उसकी वजह से, वो stress की वजह से फिर वो suicide करते हैं. Dowry difficulties, marital problems होती है, loss of the beloved one, either
ऑफ द पेरेंट और एनी फ्रेंड और एनी रिलेटिव, वो हो सकता है, या कभी किसी सोशल ग्रुप ने उसको एलिनेशन या आइसोलेट कर दिया, वो एक क्या इसको बोलते हैं फैक्टर बन सकता है। फाइनेंशियल या ऑक्यूपेशनल डिफ़िकल्टीज़ है उसको, ही इज़ नॉट एबल टू गेट हिज बोथ एंड्स मीट, ही इज़ नॉट एबल टू सर्वाइव बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक कंडीशंस, उसके पास कोई जॉब नहीं है। these may be the psychosocial factors for the etiological cause of the psychiatric this suicidal threats. Now risk factors, what are the risk factors for the suicide, and क्या क्या चीज़ बन सकता है कि उस टाइम ज़्यादा रिस्क होता है for carrying the suicide. The age is the main risk factor, that is the males above 40 years of the age and the females above 55 years of the age, they attempt to the suicide. 6 men have the greater risk of completed suicide, means definitely वो क्या उसको बोलते हैं एक ही गो में जाएंगे, जैसे हमने अभी बात की थी। या सुसाइड इज़ 3 times मोर कॉमन इन मैन देन इन द वुमेन, बिकॉज अगर हम सुसाइड की बात करेंगे, वर्ड ही इज़ टोटली अटैम्प्ट करेगा मर्डर एंड ही विल डेफिनेटली डाई फॉर इट, दैट इज़ वाई कि मेल्स में ये अटैम्प्ट, अगर हम बात करेंगे अटैम्प्ट का क्या इसको बोलते हैं रिस्क फैक्टर किन में ज़्यादा है, फीमेल्स में। बट सुसाइड फिर सुसाइड कि वो मार ही जाता है, मर्डर ही होता है उसका, सेल्फ मर्डर, वो तो मैंस में, क्योंकि वो एक ही अटैम्प्ट में ऐसा कदम उठाते हैं, वो करते हैं। लेकिन जो फीमेल्स है वो कॉशियसली करते हैं सुसाइड, तो अटैम्प्ट ज़्यादा है लेकिन सुसाइड रेट्स कम है एज़ कम्पेयर टू द मेल्स। और ये पाया गया है वुमेन हायर रेट अटैम्प्ट, जो मैं अभी बात कर रही थी, अटैम्प्ट सुसाइड है। बीइंग अनमैरिड होना, डिवोर्सड या विडोज और सेपरेट होना, वो भी एक रिस्क फैक्टर बन सकता है। बिकॉज स्टडीज़ हैव, यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूँगी, स्टडीज़ हैव फाउंड दैट कि हम देखते हैं कि मैरिटल कपल्स में ज़्यादा सुसाइड है, और मैरिटल मैन वी कैन से, और द अनमैरिड मैन। लेकिन हम ये सोचते हैं कि फिर उसके बाद टेंशन हो जाता है शादी के बाद, एंड सो सुसाइडल रेट्स इंक्रीज होती है। बट नो, स्टडीज़ हैव फाउंड दैट द अनमैरिड कपल्स आर इन द ग्रेटर रिस्क, और अनमैरिड में ज़्यादा रिस्क होता है सुसाइड अटैम्प्ट करने का, बिकॉज इन द मैरिड दे कैन शेयर देयर थिंग्स with their spouse, and the stress level, the anxiety level, it gets almost half. So being unmarried वो create कर सकता है, being widowed, being separated, divorced or whatsoever. और उनमें भी डेफिनेटली सुसाइड थ्रेट होता है, जिनमें टोटली डिफरेंट सुसाइडल प्लान होगा कि मुझे ये करना ही करना है सुसाइड, और देयर इज़ द हिस्ट्री ऑफ प्रीवियस सुसाइडल अटैम्प्ट्स जिसने किए होंगे, उसमें भी इनका रिस्क होता ही है कि वो अगली बार भी सुसाइड अटैम्प्ट करे। एंड रीसेंट लॉसेस व्हाट्सएवर, फाइनेंशियल लॉस, द ब्लाउड लॉस और एनी अदर लग्जरी लॉस और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन लॉस, उसमें भी रिस्क होता है फॉर अटेम्प्टिंग द सुसाइड. That was all about today's video. I'll be soon with the second part of the video, inshallah ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.